Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about friction. In this chapter you will learn friction, types of friction, causes, laws, rolling friction, friction in fluid and gases, and methods of changing in friction. Write 5 real life examples of friction you will see around yourself. अपने आसपास जो भी आप friction के example देख सकते हैं. Walking, running, flying, hitting, or writing is also or example of friction. You will read previous that friction is contact force that tends to stop moving object. किसी भी चलती हुई चीज को रोकना क्या कहलाता है? फ्रिक्शन यानी घर्षण. And also tends to stop stationary object from moving. Let us now study friction in detail. मतलब इस चैप्टर में जितनी भी फ्रिक्शन से रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में आप एक्सप्लेन में पढ़ेंगे. We will have seen that football rolling on the ground comes to rest after some time. किसी भी लुढ़कती हुई चीज को, कोई भी चीज को आप थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, धकेलेंगे तो एक टाइम के बाद वो जाकर रुक जाती है. ऐसा ही नहीं है कि आपने एक बार उसे धकेला या टॉय कार को चलाया या बॉल को हाथ मारा तो वो लगातार चलती ही जाएगी. नहीं, एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी. वो किस वजह से होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन. This happens because of phenomena that is opposing the motion football or bicycle over the ground. It is because of force acting between the ball and ground, wheels of cycle and the ground. This resistive force acting between two bodies contact in motion and that oppose the motion is called friction or frictional force. यानी जब वो रुक जाती है चलती हुई चीज, वो किस वजह से होता है? घर्षण की वजह से. फ्रिक्शन एग्जिस्ट ओनली टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. और फ्रिक्शन कब होता है? जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. किसी चीज को आप स्लाइड कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, ये हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कि आप इसको सिर्फ पुश कर रहे हैं, सिंपल. और इसके नीचे आपने व्हील्स लगा दिए और फिर इसको आप धकेल रहे हैं तो ये हो गया आपका rolling friction. The friction force acting between two surfaces when an object rolls over the surface. यानी क्या हो रहा है? आपका ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, गोल गोल होके आगे जा रहा है. फिर है स्टैटिक फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेशन मोशन बिटवीन देम. स्टैटिक यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. फिर आया लिमिटेड फ्रिक्शन. The maximum value of static friction between two surfaces in contact beyond which the surface start moving over the other is called limited friction. यानी एक सतह दूसरी के ऊपर क्या कर रही है? मूव कर रही है. Let us consider a block of weight. अब आप किसी ब्लॉक को जिसमें वजन है उसको आप धकेलेंगे तो कौन सा रूल फॉलो होगा? देखिए, R is normal reaction and block is the horizontal surface. In balancing mg, V R is equal to Rmg. Suppose small force P is applied on the block its right, the force of friction F will be its opposite side. Friction जो है वो हमेशा opposite side वर्क करता है. Causes of the friction. Due to the interlocking of surface. जब दो सतह आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती हैं, बंद कर देती हैं. No solid surface is perfectly smooth. The degree of roughness vary from surface of surface. Even a surface which looks smooth, जो स्मूथ सरफेस होगी लेकिन आपको वो रफ दिखाई दे रही है, वो क्या है? आपका प्रोजेक्शन और डिप्रेशन. ये आपका डिप्रेशन, ये प्रोजेक्शन, ये क्या हो गई? एक दूसरे को फ्रिक्शन कर रही है, घर्षण पैदा कर रही है. और वहीं एरिया ऑफ अपीयरेंस और एरिया ऑफ एक्चुअल, यहाँ पे क्या है? कॉन्टैक्ट कम हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ज्यादा हो रहा है. दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक कर रही है, यहाँ पे इंटरलॉक नहीं कर रही है. यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा और यहाँ कम. When a body is pulled over another, the hills, valleys, uneven surface interlock with each other. अगर आप किसी पहाड़ पर है, किसी ऐसी जगह पे है जहाँ को आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी चीज के लिए, तो वो क्या होगा? इंटरलॉक करेगा आपस में एक दूसरे को. The relative motion between the two bodies, this gives rise to frictional force.
due to frictional force of adhesive between two surfaces. Two rough surfaces, when placed together, must meet only a certain point. The molecule present at such point of contact attract each other due to electrostatic attraction. These attraction are called forces of adhesive. Adhesion यानी चिपक जाना किसी चीज से. जब आप चल रहे हैं किसी चीज के कांटेक्ट में है तो आप उससे adhere हो जाएंगे या adhesive हो जाएंगे. When the body is made to move over the force, adhesion opposes the motion and gives us frictional force. Factor on which force of friction depends. On a horizontal surface, the force of friction is directly proportional. The force of friction depends on nature of surface in contact. For example, the force of friction between two highly smooth surfaces is very small to compare to the force of friction between two rough surfaces. The force of friction does not depend upon the area. जो friction है वो area पे depend नहीं करता. Laws of limiting friction. First law. The first law states that the magnitude of the force of limiting friction between any two bodies in contact is directly proportional to the reaction between. जैसे A is directly proportional to the R. Explanation: when a body is having normal reaction, R is equal to mg. Increase, therefore F increases. This means more force is required. अगर बोल सकते हैं हमारा जो R increase होगा तो हमारा F भी increase होगा. Then to move a lighter body. Learning by doing, ये आप करके देख सकते हैं experiment. Now second law. This law states that the direction of force of limiting friction is always opposite of the direction in which one body is at verge moving over. यानी एक बॉडी दूसरे पर मर्ज करती हुई उसके ओवर चलेगी. The experiment conduct above will prove the second law. It clear from above experiment that is equilibrium R is equal to mg and F is equal to P. This means force limiting friction is equal and opposite of the applied force P. Hence, the direction force of limiting friction is always opposite. इसमें जो force होगा, जो direction होगा, वो हमेशा opposite होगा या विपरीत होगा. This proves the second law of limiting friction. फिर आता है third law. This law states the force limiting friction is depend of apparent area of contact so long as normal reaction between two bodies in contact remain same. इसमें क्या होगा? फर्स्ट वाले इसमें सेकंड वाले में अपोजिट था. इसमें क्या है? दोनों बॉडीज का कांटेक्ट क्या होगा? सेम होगा. टेकिंग ऑल द मटेरियल फ्रॉम अर्लियर एक्टिविटी, जैसा कि आप इसमें करेंगे सेम वैसा ही है. रिपीट द अबव एक्टिविटी एंड डिटरमाइन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इन द केस वी विल फाउंड एज दैट ऑफ फर्स्ट लॉ, you must have observed the total normal reaction in both cases. In the first activity, the blocks are placed in another and area of block A is contact with surface of table. Here the area of surface in contact of block A and B both are contact with the surface of table. This proves the third law. Fourth law. This law states that the force of limiting friction between any two bodies in contact depend on material and nature of surface. इसमें क्या होगा? सेकंड में क्या था? अपोजिट था. थर्ड में सेम. इसमें क्या है? जो बॉडीज जो एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही हैं उनका जो मटेरियल और नेचर है वो सरफेस क्या है? वो इस पे फोर्थ लॉ पे डिपेंड करेगा. यानी घर्षण किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल और नेचर पे, कि जो चीज रोल हो रही है या स्लाइड हो रही है उसका मटेरियल और नेचर क्या है. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस in contact defined as angle which the resultant of the force of limiting friction F and normal reaction R. Observe the figure OA. OA represent the normal reaction R which balance the weight mg. OB represent F, the limiting force of sliding friction where the body tends to move. To write complete parallelogram OBC, join which represent resultant RF by definition OAC and the friction between two bodies. बिल्कुल बराबर है दोनों. इधर से फ्रिक्शन लगाया जा रहा है तो P हमारा इधर आ गया और ये वाला एरिया कितना हो गया? सेम जितना इधर है. अब आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two surfaces in contact when one of the surfaces is rolling on the other.
द फ्रिक्शन एक्सर्ट व्हेन द व्हील आर मोशन इन द रोलिंग फ्रिक्शन। यानी व्हील्स जब मोशन में होंगे, गति में होंगे, तब हमारा मोशन होगा, फ्रिक्शन होगा। अगर ये रुके हुए होंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा। कंसीडर अ हैवी ट्रे मूविंग ऑन अ स्ट्रेच। It is very difficult to move along the surface of a street. The tray is therefore mounted on wheels. यानी जो ट्रे है हमारी व्हील्स पे, पहियों पर टिकी हुई है। लिटिल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ट्रे जो है वो आगे की ओर खिसकना शुरू कर देगी, जिसके ऊपर वो टिकी हुई है स्टील की बॉल्स पे। द होल कंपोनेंट इज कॉल्ड बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग जो है वो क्या बोल सकते हैं, इजी कर देता है हमारी गति को आगे ले जाने के लिए। द एक्सेल इज सच व्हीकल रोटेट्स। और एक्सेल जिससे व्हीकल हमारे रोटेट हैं वो क्या करेंगे, विदाउट स्लाइडिंग। आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। जिस चीज के नीचे पहिए लगे होंगे उसे आपको धकेलने में ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा या ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, द स्लाइडिंग डोर ऑफ एन अलमीरा have small ball bearing on which doors move. The vehicles are mounted on wheels. Heavy rounded items like drums, cylinder, जिनको आप इजीली मूव कर सकते हैं, ये भी रोलिंग फ्रिक्शन है। A ball rolling on ground is an example of rolling friction. Causes of rolling friction, ये तो हो गया हमारे बेनिफिट कि रोलिंग फ्रिक्शन ने हमारी सारी चीजें आसान कर दी। अब क्या है कॉज, why it is easier to drive bicycle when its tire are fully inflated. When a tire is fully inflated, it becomes hard to get compressed. जब टायर में, साइकिल के टायर में प्रॉपर हवा भरी होती है तो उसे चलाना आसान होता है। जैसे ही धीरे धीरे हम उसे लगातार चलाते रहते हैं तो हम देखते हैं साइकिल के टायर की हवा कम होने लगती है। तो हमें उसे चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, पैरों को जोर जोर से या ताकत से चलाना पड़ता है। हमें थोड़ा सा हार्ड हो जाता है साइकिल को चलाना। दिस रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड साइकिल मूव्स फास्ट। अब जब हम उसमें ज्यादा हवा भर देंगे पहियों में तो फ्रिक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, हमारी साइकिल जल्दी जल्दी चलने लगेगी। When a body rolls over a railway track, the area of contact is very small. Therefore, pressure exert, which is equal to weight area, is very large. This causes a depression in the surface. The cause depression in the surface below the body, the mount or a bump in front. It turns the surface of rolling body in contact get compressed slightly. At this stage, two things happen. The body pulls out the depression and goes uphill along, cumulatively detach itself the road KL, which opposed by a forces of adhesion between surfaces in contact. This causes rolling friction. Friction in fluids and gases. Till now we have discussed the friction of solid object. ऊपर हमने सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन होता है उनके बारे में पढ़ा है। अब आता है हमारा फ्रिक्शन इन फ्लूइड एंड गैसेस। सिमिलरली व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ लिक्विड or gas its surface experience friction. When a solid object is in contact with fluid, such as liquid or gas, and force is applied on other object or a fluid, there is friction that easier the motion liquid and gases together term as fluid. जब भी आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, हमारा स्टार्ट हो जाता है। फ्रिक्शन इन लिक्विड, liquid exert friction between is less as compared to friction exert in solid. लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। द फ्रिक्शन इन लिक्विड चेंज विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फ्रिक्शन चेंज हो जाता है जब लिक्विड की डेंसिटी चेंज होती है। द नेचर हैज मेड बॉडी वाटर एनिमल्स फिश सिलेंड्रिकल। यानी जितनी भी हमारी पानी में चलने वाली चीजें होती हैं उनकी जो शेप होती है उसे स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। यानी आगे से चपटी जो पानी को चीरती हुई या फ्रिक्शन को चीरती हुई आगे बढ़ जाती हैं। शिप्स, बोट, स्ट्रीमलाइन टू मूव स्मूथली, आसानी से चल सके। जो हमारी फिशेज है उनकी बॉडी भी ऐसी होती है। फ्रिक्शन इन एयर, एयर exerts friction but lesser than that liquid and solid. Air friction is due to moving object through the air, hence moving the molecules of air aside. A large, the larger cut, the larger the object, the more has been moved aside and so larger than the friction. जितना एरिया लार्ज होगा फ्रिक्शन भी उतना ही लार्ज होगा। इवन सरफेस पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जनरेटेड फ्रिक्शन सिंस मॉलिक्यूल्स एयर कोलाइड विद सरफेस एंड आर सो पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्टली बाय collision. By Newton's second law, they push back the object, thereby generating more air friction. यानी हल्का सा पीछे हटना और फिर प्रेशर से आगे जाना।
अब ये वाली आप जो स्किल है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, ये खुद रीड करेंगे. नाउ एग्जांपल्स. द बॉडी ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स आर शेप्ड ऑफ एयर एक्सर्ट्स, जो हवा को चीरती हुई आगे जाए. व्हेन एन एरोप्लेन्स लैंड एंड ट्राइंग टू स्लो डाउन, large flap and wings provide the flat surface and extra air resistance to help the aeroplanes come to a stop. So bodies of airplane are also designed according to friction. Similarly, automobiles like car, buses, etc. are streamlined to face friction exert on them. A pilot jump from an aeroplane with the help of parachute. Emergency situation, the air friction prevents the rapid fall of pilot. Kite flies in the air because of friction. Advantages of friction. Walking will not be possible without friction. अगर friction नहीं होगा तो आप proper चल नहीं पाएंगे, walk नहीं कर पाएंगे. No two bodies will stick each other. दो bodies आपस में stick नहीं हो पाएंगी. Brakes, the vehicle will not move. Nut and bolts for holding the parts of machinery and other items together. Writing on blackboard on paper. Transfer of motion. Adhesive will not work. Cleaning with sandpaper will not be impossible. Our disadvantages. Friction is an evil because it involves unnecessary waste energy. Friction always opposes the related motion between any two bodies and contact. Friction causes wear and tear of parts of machinery. Frictional force result is production of heat, which causes damage of the bodies in contact machinery. Method of changing friction. Friction को आप किस तरह से कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं? First one is by polishing. Polishing make the surface smoother, therefore friction reduce. घर्षण जो है वो friction अगर polish कर देंगे किसी चीज को आप तो friction जो है वो कम हो जाता है. By lubrication. Lubricants, oil, grease. किसी चीज में आप grease डाल देते हैं तो वो बहुत स्मूथ चलने लगती है ना, क्यों? जैसे हम कभी अपनी साइकिल वगैरह में मशीन्स वगैरह में ऑयलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, वो इजीली क्या होती है हमारी चीजें स्मूथ चलने लगती हैं. बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. We know that friction depends on nature of material of surface in contact. The surface of moving parts of machinery in contact may be lined with material having low coefficient friction. यानी ऐसी मटेरियल का यूज करना जिसमें जो फ्रिक्शन है वो लो हो. Basic tire are made up of rubber or not iron. This is because the friction between rubber and concrete is less than between. अगर हम लोहे के टायर बनाने लगे तो क्या होगा, जो हमारा कंक्रीट जिससे हमारी सड़क बनती है और लोहे के पहिए में जो क्या हो फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा. वहीं अगर हम रबर के टायर बनाएंगे और कंक्रीट के सड़क पे चलाएंगे तो फ्रिक्शन जो है हमारा वो क्या है, देखिए. On the same basic tire made, rubber are not iron. This is because the friction between rubber and concrete is less. जो friction है वो हमारा less होगा. By streamlining, friction due to air, water and considerably reduce the streamlining the shape of body. इनकी shapes ऐसे बनाई है जो friction कम लगे और ये हवा को और पानी को चीरती हुई आगे बढ़ जाए. जैसे जेट, एरोप्लेन्स, फास्ट मूविंग कार, फिशेज, ये सब क्या है स्ट्रीमलाइन शेप के. बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग. आपने देखा होगा बीच में वो चले थे आप लोगों के, वो जो घुमाने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पिनर्स चले थे. उसमें बॉल बेयरिंग होती है जिससे एकदम से आप हाथ मारते हैं और वो काफी देर तक घूमते रहते हैं. उसके अंदर क्या लगा होता है, बॉल बेयरिंग, जो फ्रिक्शन को क्या कर देता है, बहुत कम कर देता है. दिस इज वाई फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग. फ्रिक्शन बॉल बेयरिंग का अगर आप यूज करेंगे तो फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा. मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. ऑन अ रेनी डे सम सैंड एंड थ्रोनी और स्लिपरी ग्राउंड. क्या होता है, बारिशों के दिनों में हम फिसलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है और हम स्लिप हो जाते हैं. सैंड इज ऑल्सो सैंड इज ऑल्सो स्प्रेड ऑन द स्नो कवर्ड रोड. अब जहाँ पे बर्फ पड़ी है वहां पे भी हम लोग स्लिप हो जाते हैं, हमारी ड्राइव स्लो हो जाती है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर सिंथेटिक रबर इज प्रेफर्ड because coefficient of friction with the road is larger. Proper treating of tires also increase the force of friction. Tires of automobiles are made coagulated and rough to increase the friction. जो टायर्स हैं वो रफ बनाए जाते हैं ताकि वो रोड्स पे आसानी से चल सके और फ्रिक्शन जो है वो कम हो. I hope you will understand this chapter. Now recapitulate an encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. Roughness of surface causes friction. All surfaces have irregularities
both depression and projection. Friction is also exerted by both liquid and gases. Friction can be reduced by all of these. Polishing से भी, lubricating से भी और streamlining से भी. Filling in the blanks. The degree of roughness varies from surface to surface. The force of friction depends on the nature of dash in contact. Nature of surface in contact. The dash of static force is not constant. Measurement. MEASURMENT. The friction exerted when the wheels are in motion is rolling friction. Now take right and correct the incorrect statement. A rolling ball cannot on its own. True. The roughness of surface is responsible for friction. True. Smoothness of surface increase friction. True. Without friction we cannot walk. It is also true. More the area, more is the friction. It is false. Now question D, match the following. Liquid, fluids, liquid and gases. Friction, unnecessary evil. Fourth law of friction depends on nature of material and surface. Line of action of force. Resultant of the force of limited friction. Polishing makes the surface smoother. I hope you will understand this chapter and read this chapter again. And now rest of the exercise with yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.